Morning, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. Today we will see how can we use range function in Python. So let's get started. Now what basically a range means? Whenever we say range, it basically identify that key range have some starting point and some ending point, and the range will give the values in between that starting and ending point. So what basically range function do in Python? The range function returns sequence of numbers, and the range function generates a list of values in sequence. Okay, so what basically range function do in Python? It generate a list of values but in a proper sequence. Now the range function by default starts from 0. If you don't give any starting point, then by default it will start from 0, and by default it incremented by 1. If you don't provide any increment value, then by default it will increment by 1 and stop before a specified number. Okay, so we will see the syntax of range function. So what is the syntax of range function? Basically range function take three parameters. First parameter is start, second parameter is stop, and the third parameter is step. So what is the meaning of these parameters? We will see one by one. First of all, we will talk about start, and it is an optional argument, and integer number specify at which position to start. By default start value is 0. So start will tell from which position I want to start our range, and by default if I don't provide the start value, then it will take 0, and if I provide any value, then it will take that value, and we can only provide the value as an integer. ओके जो स्टार्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑलवेज इंटीजर होगी, और इंटीजर के अलावा हम कोई भी यहाँ पर दूसरी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते. नाउ आवर सेकंड पैरामीटर इज स्टॉप. सो व्हाट बेसिकली स्टॉप डू? ये आपको सिग्निफाई करेगा कि हमारी रेंज को कहाँ पर स्टॉप करना है. ठीक है, इट इज एन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट. ठीक है, स्टॉप क्या होता है? एक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको स्पेसिफाई करनी ही होती है. एंड इंटीजर नंबर स्पेसिफाइंग एट विच पोजीशन टू स्टॉप. सो ये जो स्टॉप होता है वो भी क्या होता है? एक इंटीजर नंबर होता है. द लास्ट वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूडेड. और अगर मैंने यहाँ पर जो भी नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, तो वो जो उसकी लास्ट वैल्यू होती है वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं होगी. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ माई स्टार्ट वैल्यू इज 0 एंड माई स्टॉप वैल्यू इज 3. सो हियर जो मेरा रेंज नंबर प्रोवाइड करेगा वो क्या करेगा? 0, 1, 2, 3 प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज जो लास्ट वैल्यू होती है रेंज की वो प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है, वी विल सी दिस बाय एग्जांपल, बट टिल नाउ यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि स्टॉप भी क्या होगी? एक इंटीजर वैल्यू होगी, एंड स्टॉप एक ऐसा आर्गुमेंट है जो हमें प्रोवाइड करना ही होगा, जिसका कोई ऑप्शनल वैल्यू नहीं होती. Okay, this is a required argument. Now our third argument is step. Now what step do? It is again an optional argument, an integer number, either it can be positive or negative, specifying the incrementation. By default value for step is +1. Okay, so जो step argument है, again it will take only integer, and it is the optional argument. It's up to you whether you want to provide the value or not, but if you don't provide any value, then by default it will be incremented by +1, and if you provide any value, then range will incremented by that particular value. Okay, so we will see some example, and after that this function will be more clear to you. Now next, one question can come in your mind that can we use any data type as start, stop and step? So क्या हम कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं एज अ स्टार्ट वैल्यू, एज अ स्टॉप वैल्यू, एज अ स्टेप वैल्यू? देन
Answer is no, because the range function take the integer value for start, stop and step. So जो start, stop और step की जो values होगी वो always क्या होगी, integer होगी. And what do you mean by integer? Integer can be positive number, integer can be negative number, but integer cannot be in a decimal form. So all the positive and negative numbers are known as the integer. So range जो आपकी में जो start, stop और step parameter होंगे वो always क्या होंगे, integer होंगे. Now the second point that you keep in your mind that the start value is included in the list but stop value will not be included. So हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट वैल्यू होगी वो तो हम इंक्लूड करेंगे बट जो स्टॉप वैल्यू है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं while you are using the range function. Okay, now we will see some example here. My first example is range 10. If I write range 10 here, so here we all know that range will take the three parameters and among three parameters only one is required. वो क्या है, करेक्ट, स्टॉप पैरामीटर. बाकी आपके स्टार्ट और स्टेप क्या है, ऑप्शनल होते हैं. तो हियर हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर प्रोवाइड किया है. सो व्हाट डज इट मीन्स कि कौन सा पैरामीटर होगा, इट विल बी स्टॉप पैरामीटर, बिकॉज स्टार्ट क्या है यहाँ पर 0 है और स्टेप क्या है यहाँ पर 1 है. हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल डील विद द default values. So here start value is 0, stop value is 10 and step value is 1. So what will be the range or values generated by this range function? The answer will be that. Here it will take 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट, here इसने क्या किया है, 10 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि इन रेंज फंक्शन वी विल इंक्लूड दी स्टार्ट वैल्यू बट वी विल नॉट इंक्लूड दी स्टॉप वैल्यू. तो ये जो 10 जो स्टॉप वैल्यू है ये हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है. ठीक है, सो जो भी रेंज दी हुई होगी उससे क्या करेगा, -1 टाइम आपका रेंज फंक्शन चलेगा और जो भी स्टॉप वैल्यू गिवन होगी वो उसको काउंट नहीं करेगा. आई होप इट इज क्लियर. नाउ here you can see that I have passed two parameters, and if I pass two parameters then this will be my starting point and this will be my ending point. तो यहाँ पर मुझे 5 से 10 तक की रेंज जनरेट करनी है. So what will be the answer? 5, 6, 7, 8 and 9. Again 10 is not included here because we all know that key in range function the stop value will not be included. Now 6, 1. What will be the answer of that? Here 6 is the starting point and 1 is the ending point. Then what will be the answer of that? The answer is no output. Why? What is the difference between this statement and this statement? The difference is here 5 is my starting point, 10 is my ending point and step value is +1. Because I have not provided any step value, then by default in my second example it will take the step value as +1. So that's why it is incremented in +1. Again here 6 is my starting point and 1 is my ending point, and here I have not provided any step value, then again it will take +1 as a step value. But what is the problem? If I do increment by +1 and my starting point is 6, can it is possible then at some point I will reach to 1? No, because here my starting point is 6, then after +1 it will be 7, then after +1 it will be 8, then 9, then 10, then 11, then 12, then 13. So there is no point when I will reach to 1. So that's why it is giving me no output here. Okay, so here you have to keep in mind that if your step value is +1, then your lower limit is greater than your upper limit. Means if your step value is +1, then start value must be lower than stop value. Okay, so I hope this point is clear to you. Now here my starting point is 5, my ending point is 15, and I want
increment of 3, not 1. So what will be the output? First value will be 5, then the increment will be 3, then 5 plus 3 8, then next value will be 8 plus 3 11, then 11 plus 3 14, then 14 plus 3 17, और जो आपका रेंज में इंक्लूड नहीं है. सो दिस विल बी माई फाइनल रेंज 5 8 11 and 14. Okay, now in next example 5 3 and minus 1. So here my range will be 5, then minus 1 4, then minus 1 3, and I will not include 3 because the stop value will not be included. So that's why this range will give me the result 5 and 4. Next 10 1 and minus 2. So what will be the result? 10, then minus 2 8, then minus 2 6, and minus 2 4, then minus 2 2, then minus 2 0, and here this will be the final answer 10 8 6 4 and 2. And what will be the result of that range? 3, then plus 2, minus 1, then plus 2 1, then plus 2 3, then plus 2 5, but we will not include 5. So my final range will be minus 3 minus 1 1 and 3. And the last example minus 3 5 and minus 1. So what will be the result of that? The answer will be no output. Here again the reason is same, because here my starting value is minus 3 and I want the increment of minus 1, but if I add minus 3 minus 1, the result will be minus 4, then minus 5, then minus 6, then minus 7, then minus 8. So there is no point at which I will reach to 5, because यहाँ पर जो stop point 5 दिया हुआ है वो क्या है आपका, हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज जो रेंज हो रही है वो नेगेटिव में आपकी इंक्रीज हो रही है. सो आई विल नॉट रीच to the positive, though that's why it will not give me the output. So the second point here is that if I am using the negative step value, I have to keep in my mind that कि my start value must be greater than my stop value. Okay, so there are 2 points that you keep in your mind, that if my step value is positive, then my start value must be lower than my stop value, and if my step value is negative, then my start value must be greater than my stop value. Okay, so these are very obvious point, and I hope you all will understand. So student, I hope all these things are clear to you, but still if you have any doubt you can ask in the comment box. So student, that's it for today. Thank you and keep learning.